Then we have seen all the hormones over here. Short-term stress responses and long-term stress responses. So short-term mein it is because of adrenal medulla, and long-term it is because of this cortex. ठीक है? Then pancreas we have seen, islet of Langerhans yesterday only. About all these things we have already completed. Now let us begin with the testes part. So testes you have already learned in your reproduction lesson. Where they are present in the scrotal sac outside the abdomen of the male. Testes perform dual function. Okay, it's a primary sex organ as well as it is an endocrine gland. Endocrine gland बोल रहे मतलब क्या बना रहा है? Hormone बना रहा है. Which hormone? Testosterone hormone. So we have already learned the TS of the testes. In that we have seen the seminiferous tubule. They are responsible for the formation of sperm. Seminiferous tubule sperm बनाता है. उसके अलावा we can see the Leydig cells या फिर interstitial cells, है ना? Leydig cells या फिर जिसको हम interstitial cells बोलते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? हार्मोन बनाते हैं. Androgen hormone called as a testosterone. And this testosterone is controlling the secondary sexual characters in male. What are the secondary sexual characters? Muscle growth, strength, increase in height, growth of facial hair, pubic hairs, voice में deepness आना, ठीक है? And sperm production होना. So these are the things, body changes which is taking place due to the testosterone during the time of puberty. So it's very simple, just go through. ये आपने सब चीज पढ़ा हुआ है. So एक बार go through the points, all of you. Leydig cell किसकी वजह से influenced रहता है? Which hormone? Luteinizing. Very good. Luteinizing hormone. Shabash. Very good. It is because of the luteinizing hormone. Male hormone is also called as the androgens. Similarly, for the ovary also, ovary produces how many hormones? Actually, there are 4 hormones produced by the ovary. 4 hormones. Estrogen, प्रोजेस्टेरॉन तो मैंने आपको ऑलरेडी रिप्रोडक्शन लेसन में बताया था. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पे बताया था मैंने आपको? ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन वी हैव लर्न द डेवलपिंग फॉलिकल्स. जब ये ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, यस, तो ग्रेफियन फॉलिकल इज लाइंड बाय 2 लेयर्स, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. जो तो फिर जो थीका इंटरना है वो स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन में ईस्ट्राडियोल इज अ मेन ईस्ट्रोजन. ठीक है, ईस्ट्राडियोल इज अ मेन ईस्ट्रोजन. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल. ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है फीमेल में? हाई पिच ऑफ वॉइस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल. एस्ट्राडियोल यहाँ पे नहीं दिया गया है, सो प्लीज नोट डाउन दैट एस्ट्राडियोल इज द मेन ईस्ट्रोजन. Estrogen can be written by OES or it can be written as ES also. Both the ways are right. Either we can write an OES या फिर E से भी start करते हैं हम. Estradiol is the main estrogen. Next comes the progesterone. Progesterone is also called as a pregnancy hormone.
प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन, है ना। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। What is the function of this hormone? It will maintain the endometrium, है ना, एंडोमेट्रियम को थिक ही रखेगा। जैसे इसका लेवल कम होता है तो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है और एंडोमेट्रियम पूरा टूट जाता है। तो एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखने के लिए दिस हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में ये इम्प्लांटेशन में भी मदद करता है, इम्प्लांटेशन में भी मदद करता है। तो इसका दो मेन काम क्या है? एक तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस को इंटैक्ट रखना और दूसरा इम्प्लांटेशन में मदद करना। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेस्ट डेवलपमेंट आल्सो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी 2 minutes. All of you please on the open your textbook. All of you please open your textbook. I will also open the textbook. Just give me 2 minutes. Now, if you can see this textbook, all the diagrams are very, very important. So we have seen this part. Now, yes, I was telling you about the estrogen. You can just mark over here. It has been given in your textbook, estradiol. Okay. Then next, relaxin hormone. Relaxin is also secreted by the corpus luteum at the end of gestation period. Gestation का मतलब क्या होता है? 9 month. Is called as gestation period, है ना? ये क्या काम करेगा? It will relax the cervix of the female and the ligament of the pelvic girdle for easy birth of the young one. ठीक है, again secreted by the corpus luteum. Relaxin. So relaxin जैसा नाम है, ये क्या काम कर रहा है? It is going to relax the cervix as well as the pelvic girdle. Inhibin. Again, it is secreted by the corpus luteum. It will inhibit the FSH and the gonadotrophic hormone production. Understood? All the 4 hormones. Yes, ma'am. Yes. Next endocrine gland is placenta. Placenta.
Placenta is also called as a temporary endocrine gland. Temporary endocrine gland. It is also called as a temporary endocrine gland. Placenta is the connection between the mother and the child. So during the pregnancy, placenta secretes which hormones? So all of you please mark it in your textbook. It secretes estrogen, progesterone, and HCG. This HCG has been tested in the urine kit. HCG has been tested in the urine kit. That is human chorionic gonadotropin hormone. And what? Human placental progesterone also. So please note down. This can be asked as a 1-mark question for your board exam. Name the hormones secreted by the placenta. Yeah, name 2 hormones or name the hormones. So you should be knowing all these hormones. Okay. ये क्या काम कर रहा है? Because placenta is developed during the pregnancy, है ना? ऐसे तो placenta develop नहीं होता है, तो it will take care of all the things during the pregnancy, like maintaining the endometrium, ठीक है? It will help the contraction of the uterine muscles, all these things to maintain the pregnancy, because it has been developed at the time of pregnancy only. Okay. So I hope all of you have underlined that also. Now, the last part of the lesson is about the gastrointestinal tract. Gastro means stomach. Gastrointestinal tract. So, stomach or intestinal tract में कौन से hormones secrete होते हैं? So, we have learned in your 11th standard, you have already learned that TS of stomach or TS of intestine has the innermost layer called as a mucosa, if you remember. म्यूकोसा जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे हम म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है, जिसमें विलाइज प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. सो दे प्रोड्यूस अ हार्मोन व्हिच हेल्प, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन? गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन क्या करेगा? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक के ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा टू प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस. सिक्रेटिन किसको पुश करेगा? पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन के लिए एंड बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए. मतलब इट विल हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन पैनक्रिया एज वेल एज द लिवर फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस. देन सीसीके जिसको पीजेड भी कहते हैं, पीजेड और सीसीके, ये क्या काम करने वाला है? इट विल स्टिमुलेट द पैनक्रिया टू रिलीज इट्स एंजाइम. ठीक है, देखो वी नो दैट द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम, ठीक है, पर सिक्रेटिन तो सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए स्टिमुलेशन करेगा, बट वो जूस के अंदर एंजाइम है या नहीं, वो एंजाइम का ध्यान कौन दिलवा रहा है? विद द हेल्प ऑफ द सीसीके. साथ में वी नो दैट द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस बट इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, सो सीसीके विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ दिस बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. जीआईपी नाम से ही पता चल रहा है, इनिबिटरी. इनिबिटरी मतलब इनिबिशन कर रहा है. सो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस नहीं सिक्रीट होना चाहिए, इसका ये ध्यान दे रहा है, इनिबिशन कर रहा है. अंडरस्टूड ऑल द फोर? दिस यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 11th स्टैंडर्ड आल्सो, ठीक है. प्लीज ट्राई टू नो द अल्टरनेटिव नेम आल्सो. एंटेरोगैस्ट्रॉन, इसका अलग अलग नाम भी आपको याद रहना जरूरी है. फिर हम बात करते हैं किडनी की. तो किडनी 3 चीज सिक्रीट करता है. रेनिन, रेनिन का तो आपने 11th में पढ़ा था, टू फॉर्म द रैस सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन, याद है ना? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म रैस. यस. तो रेनिन का तो बहुत बड़ा रोल है ही. इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रो मतलब ब्लड सेल्स, पोएटिन या पोएसिस का मतलब है फॉर्मेशन, सो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. Calcitriol related to something like calcium, so calcitriol is active form of vitamin D3 which will help in the bone development. So अगर किडनी खराब है, किडनी खराब है, अगर किसी को डायलिसिस पे रखा है, as I've told you earlier also, अगर किसी को रखा है तो डायलिसिस is just a holding measure. Holding measure, we can just prolong the death, but the solution is transplantation. If kidney transplantation is done,
then nothing is a problem. But अगर सिर्फ पेशेंट को डायलिसिस पे रखा है तो ऑब्वियसली इट इज जस्ट अ होल्डिंग मेजर. नेक्स्ट, हार्ट में भी यू हैव ऑलरेडी लर्न, इट रिलीजेस द ANF, increases the sodium excretion by kidney and reduces the blood pressure. That also we have learned. Then HT is the use of hormone in the medical treatment. It is applied in pregnancy. जैसे for example कोई फीमेल है जिसके बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन इतने अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ठीक है, इफ यू आर बिकमिंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, कोई आप लोगों में से कोई गायनेक बनेगा तो यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस अ प्रेग्नेंट वुमेन्स, एंड इफ यू फील दैट द फीमेल का प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज नॉट सो गुड, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी एडमिनिस्ट्रेटिंग द फीमेल विद अ प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस, है ना. तो इसे हम क्या कहेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन. सो हार्मोन थेरेपी. मेनोपॉज के वक्त कौन सा हार्मोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है क्योंकि एग फॉर्म नहीं होता है. तो अगेन अगर मेनोपॉज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं रिलेटेड टू द ईस्ट्रोजन, तो अगेन वी कैन गिव द ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन. ऑस्टियोपोरोसिस हमने देखा ही था बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन. ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यस, किसी का स्टूडेंट ग्रोथ है तो. इंसुलिन के बारे में तो यू ऑल नो, है ना, जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं दे आर टेकिंग इंसुलिन हार्मोन, correct. And again in cancers also, some cancers also hormone can be given. Understood? Yes. Yes. Okay, now do you know वाला column is very important for the board exam. जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बोर्ड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है. तो डू यू नो में फेरोमोन्स के बारे में दिया गया है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन के. So pheromones are seen in the, as I've told you, it is seen in insects and all. Human being में भी दिखता है, no doubt, for sexual attachment, for sexual this thing, but mostly we can see in insects. So for locating their honey hive, for mating, all these things you can just have a look. ठीक है, एक बार देख लो ये पूरा पैराग्राफ. Any doubt you can just ask me. You can just underline the terms also, Please underline, they are the social hormones or pheromones. Pheromones are also called as a social hormones. They are commonly called as a sex attractants or external hormones also. क्यों इसको external hormones बोल रहे हैं? Because they are produced outside the body ना, इसीलिए. नहीं तो हमने endocrine glands में क्या पढ़ा था कि they are being released into the blood, but these are being released outside the body, therefore they are also called as a external hormones. So please underline the alternative terms also. So as it has been given sex attractant, so obviously it will help in mating. Okay, it is used for locating the food. Danger के बारे में बताता है. You can see the last paragraph also. You all know na, work this honey bees में जो वर्कर बी होती हैं वो भी फीमेल होती हैं. तो worker bees are being maintained in a sterile state by pheromone called as anti-queen factor produced by the queen. This is an important point, Yes, you have I don't know, you must be knowing or not. अभी जैसे एक पूरा हनी हाइव है, एक पूरा उनका मधुमक्खी का छत्ता है, तो उसमें सिर्फ एक ही क्वीन भी होती है. Yes. Yes. वो क्वीन भी फीमेल है, वी नो, ठीक है, बट ये जो वर्कर बीज होती हैं ये भी फीमेल होती हैं. बट ये वर्कर भी क्यों नहीं एग प्रोड्यूस करती हैं? बिकॉज ऑफ दिस फेरोमोन्स. ठीक है, पर समझो किसी ने वो मधुमक्खी के छत्ते को जला दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया या कुछ कर दिया, समझो वो क्वीन बी मर गई बाय एनी चांस, सो व्हाट विल हैपन, हाउ द नेक्स्ट क्वीन बी विल फॉर्म? इसी वर्कर बी में से उनमें भी वोटिंग होता है, यू नो, दे आर सोशल एनिमल्स ना. So when we are telling social means they are working in coordination. So everyone will come and decide and they will select one worker bee as a queen bee. Understood? तो सब लोग मिलके एक वर्कर बी को ही चुनेंगे और उसको ही सेलेक्ट करेंगे एज अ क्वीन बी.
फिर उस क्वीन बी को अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको सिर्फ रॉयल जेली पे फीड किया जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और फिर उसको एक ही काम रहेगा, टू ले द एग। अंडरस्टूड? फिर वो जो क्वीन बी बनी है उसके वो क्या रिलीज करेगी, फेरोमोन्स रिलीज करेगी, ताकि दूसरे वर्कर भी स्टराइल रहे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. So see this last paragraph, all of you. Again, the last line is important. Increase in the colony size. पर अगर समझो बहुत बड़ा हाइव बन गया तो उसका नेटवर्क भी उतना होना चाहिए ना, मतलब उसका रेंज, फेरोमोन्स का रेंज फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड देन फिर सेकेंड बी कम इनटू द पिक्चर। ठीक है? Now we have completed this whole part. Only one topic has been remaining. Just a second. सबको वो 12 pairs of cranial nerves आता है ना, याद है कि नहीं, कि भूल गए हो? 12 pairs of cranial nerve याद है कि भूल गए हो? थोड़ा थोड़ा याद है, याद ही नहीं है। We have seen this part ना बेटा, ये हमने पढ़ा था ना, depolarization, polarization. Have we learned that part? Yes, ma'am. बस थोड़ा start किया था. Transmission of nerve impulses. Yes. Okay. Okay. Just a second ना बेटा, I will wait. You start reading in your textbook. So let me move to that part. We have this part, synaptic vesicles देखा था हमने, synapse भी देखा था, electrical synapse भी देखा था हमने, chemical भी देखा था. You have to start with here. Okay. Now, understand each and every point nicely and properly. Okay. It's very simple to understand. I will show you the video also. Transmission of nerve impulse, that is nerve impulse from neuron, it is having a special features.
ना पहले आप इतना सिंपल सा चीज समझ लो कि देखो एक्सॉन के बाहर वो हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे, क्योंकि न्यूरॉन एक पूरा सेल है, ठीक है। उसके अंदर और उसके बाहर देयर इज अ सोडियम पोटेशियम चैनल और अ गेट प्रेजेंट। क्या बताया मैंने? एक्सॉन है, सी आई कांट डू द एनोटेशन आल्सो ओवर हियर। हाँ देखो ये वाला डायग्राम, हाँ ये एक्सॉन, ये पूरा एक न्यूरॉन है। तो आप न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर, न्यूरॉन के बाहर रहेगा तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर रहेगा तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, आईसीएफ ईसीएफ, ठीक है। तो इसके बीच में ना देयर इज अ सोडियम गेट और अ सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम गेट और सोडियम पोटेशियम चैनल। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि लाइट जनरेट होने के लिए लाइट कैसे ट्रैवल होता है? विद द हेल्प ऑफ कैटायंस एंड द एनायंस, करेक्ट है ना? लाइट कैसे पास ऑन होता है? एक जगह से दूसरे जगह तक लाइट कैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास ऑन होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेशन और द मूवमेंट ऑफ दिस कैटायंस एंड एनायंस, करेक्ट है कि नहीं? उसी तरह से देयर इज अ मूवमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन एंड आउट। मतलब आईसीएफ से ईसीएफ, ईसीएफ से आईसीएफ, आईसीएफ से ईसीएफ, ईसीएफ से आईसीएफ। समझ में आया मैंने क्या बोला? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, क्या जा रहा आ रहा है? सोडियम एंड पोटेशियम का इन एंड आउट हो रहा है। समझा इतना बात? यस मैम। Yes. सोडियम एंड पोटेशियम का इन एंड आउट हो रहा है, जिसके वजह से अब आयंस इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? कंडक्शन, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है, फटाफट इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से। अब हम समझते हैं कि बाहर पॉजिटिव क्यों है और अंदर नेगेटिव क्यों है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। सो नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। बायोइलेक्ट्रिकल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि न्यूरॉन में हो रहा है, न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल थिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज ऑब्वियसली hormones are also responsible for the same along the neuron. The transmission of the nerve impulse along the axon tube, इसको axon tube बोलेंगे ना हम लोग, ये बड़ा सा axon tube है ना, is a result of electrical charges across the neuronal membrane, जिसके वजह से क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है पासिंग and excitation also. Each neuron has a charged cellular membrane with a voltage which is different on the outer and inner surface of the membrane. So let us see what are the charges present. So plasma membrane मतलब एक्सोलेमा बोल सकते हो आप इसको, एक्सोलेमा याद है ना आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज द एक्सोलेमा। तो मैं एक्सोलेमा भी बोल सकती हूँ, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकती हूँ। What it is going to separate the outer with the inner solution, मतलब ECF और ICF बन गया, ठीक है, of different chemical compound but having the same number of ions, having the total same number of ions. This is very important, huh? Now external tissue fluid is having more of sodium and chloride ions. बाहर ज्यादा क्या है? सोडियम है और क्लोराइड आयंस है, और अंदर ज्यादा क्या है? पोटेशियम आयन ज्यादा है। समझ में आया इतना? बाहर ज्यादा क्या है? Yes. सोडियम एंड क्लोराइड, अंदर ज्यादा क्या है? पोटेशियम ज्यादा है। अब आप देख सकते हो कि दोनों तो पॉजिटिव ही है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग नर्व या फिर पोलराइज्ड स्टेट भी जिसे हम कहते हैं। रेस्टिंग कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पोलराइज्ड कंडीशन। तो पोलराइज्ड कंडीशन में क्या कंडीशन होता है? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि बाहर पॉजिटिव है तो क्यों है? क्योंकि बाहर सोडियम और क्लोराइड आयन ज्यादा है, और अंदर नेगेटिव है पर जबकि K+ आयन ज्यादा है। तो किसी ने भी मुझे पूछा नहीं कि मैम ये तो पॉजिटिव आयन है तो फिर नेगेटिव क्यों है? डू यू नो दैट रीजन? बिकॉज बाहर पॉजिटिव है विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड थोड़े कम है, सोडियम ज्यादा है। पर अंदर क्या प्रॉब्लम है पता है? अंदर
पोटेशियम तो है, पर पोटेशियम के साथ साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड है। क्या है अंदर? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है एंड न्यूक्लिक एसिड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के वजह से और न्यूक्लिक एसिड के वजह से, वी नो दैट डीएनए आरएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आया? इसके Yes, वजह ma'am. से अंदर वाला नेगेटिव होता है। ओके, बिकॉज ऑफ प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड अंदर नेगेटिव है एंड बाहर पोटेशियम आयन ज्यादा है, सो वो पॉजिटिव है। So some amount of sodium and potassium, they always leak through the membrane. Okay, now we will be learning about the sodium potassium pump, which is actively restoring the ions to their appropriate sites. We all know that कि कोई भी आयन, अब देखो, अगर हमें ये कंडीशन रखना है कि बाहर पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब बाहर सोडियम ज्यादा होना चाहिए, अंदर नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए। पर जब जनरेशन होगा, अब ये तो रेस्टिंग कंडीशन है ना बेटा, तो रेस्टिंग कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। पर जैसे ही अगर मुझे कोई स्टिमुलस मिला, तो कोई स्टिमुलस मिला तो डेंड्राइट से स्टिमुलस आया, किधर आया? सोमा में आया। सोमा से अब क्या होगा? फर्स्ट पार्ट एक्सोनिक हिलॉक में जाएगा। अब जैसे एक्सोनिक हिलॉक में जाएगा, देयर विल बी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ओवर हियर। अब क्या होगा? धीरे धीरे सोडियम पोटेशियम चैनल, यहाँ पे गेट है, एक चैनल है, गेट है, वो ओपन होगा और सोडियम फटाफट फटाफट अंदर आने लगेगा। सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। अब क्या हो गया? अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। समझा? अंदर Yes. पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। अब इतना हिस्सा में जनरेशन हो गया, अब आगे आगे जाना है, तो क्या होगा बेटा? जैसे जैसे ये आगे आगे जा रहा है, अंदर पोटेशियम अंदर आते जा रहा है, सॉरी सोडियम अंदर आते जा रहा है, पोटेशियम बाहर जाते जाते, फिर ऐसे धीरे धीरे सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, फिर ऐसे धीरे 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 क्या हो गया? ये पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास ऑन हुआ। पर जो पीछे का हिस्सा है वो वापस नॉर्मल होते जा रहा है। जैसे जैसे इंपल्स आगे बढ़ते जा रहा है, पीछे का जो हिस्सा था वो वापस बैक टू नॉर्मल हो रहा है, रीपोलराइज्ड हो रहा है, मतलब वापस सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर रह रहा है। समझा? Yes. वापस पोटेशियम बाहर जा रहा है, मतलब ये धीरे धीरे हो रहा है, मतलब ये पोलराइज से डीपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, होते जा रहा है, डीपोलराइज डीपोलराइज, पर पीछे का जो डीपोलराइज है वो वापस से रीपोलराइज 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 हो रहा है, मतलब वापस रेस्टिंग कंडीशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नया इंपल्स के लिए, अगर नया इंपल्स आएगा तो वापस वो पोलराइज रहेगा, तभी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ना। ओके, सो against the concentration electrochemical gradient, sodium has been forced out and sodium is forced inside, and this process is brought about with the ATP, therefore it is called as an active process. Now potential difference is seen in the resting nerve, that is about minus 70 millivolts. Resting condition में कितना होना चाहिए? minus 70 millivolts का difference रहता है. So difference in the distribution of sodium and potassium on two sides of the membrane of a potential difference of minus 50 to let us say 100, average हम उसको 70 ले रहे हैं. It is mainly due to the differential permeability of the resting membrane, more permeable to the potassium than the sodium. ठीक है? मतलब क्या हुआ बेटा? In simple term, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है, मतलब वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Yes, you have learned all that things in your physics, voltage displacement. जब भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है तो वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना वोल्टेज से हो रहा है? इट इज अबाउट 50 to 100, तो हम इन दोनों का बीच का एवरेज ले रहे हैं एज 70 millivolts. Understood this much? Yes or no? Yes. Yes. So this result in slightly more potassium diffuse out than the sodium. हाँ, अब क्या हो गया? देखो बेटा, it is mainly due to the differential permeability of the resting membrane. क्या है हमारा permeability? कैसी है हमारे इसकी एक्सोलेमा की? हमारी permeability कैसी? It is more permeable to potassium ions than the sodium ion, जिसके वजह से क्या होता है? Slightly, this result in slightly more potassium diffuse out than the sodium. इसके वजह से सोडियम ज्यादा बाहर जा सकता है एज कंपेयर टू द, सॉरी, इसके वजह से पोटेशियम ज्यादा बाहर जा सकता है एज कंपेयर टू द सोडियम, बिकॉज इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन द सोडियम.
इसकी वजह से पोलैरिटी फॉर्म होती है. ओके, ions like negatively charged proteins and nucleic acid inside the cells make overall negative on inside and positive charge on outside. ये तो अभी पॉइंट मैंने आपको बताया कि अंदर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो प्रोटीन्स है अंदर दे आर नेगेटिवली चार्ज और साथ में न्यूक्लिक एसिड भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इसकी वजह से अंदर का पार्ट भले पोटेशियम क्यों ना है तब भी वो नेगेटिव है. Okay, now nerve membrane has many voltage gate channel जिसको हम सोडियम पोटेशियम गेट भी कहते हैं. वोल्टेज गेट चैनल, क्यों हम वोल्टेज वर्ड यूज करें, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज अ वोल्टेज गेट चैनल, या फिर आप इसे सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम गेट भी कह सकते हो. These gated channels are separated so to transport the ions in separately done. तो ये चैनल का काम क्या है, इस गेट का क्या काम क्या है, सोडियम और पोटेशियम का अंदर बाहर करवाना. ठीक है. So during resting condition both these gates are closed and membrane is at rest. ठीक है, जब तक मुझे कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो ये सारे गेट बंद हैं, सारे गेट बंद हैं. जैसे ही मुझे स्टिमुलस मिलेगा ये एक स्टेप वाइज सब गेट एक साथ नहीं ओपन होता है बेटा, याद रखो सब गेट एक साथ ओपन नहीं होता है. जितना हिस्सा डीपोलराइज्ड होगा उतना ही हिस्से का गेट चैनल ओपन होगा, फिर ये वापस रीपोलराइज हो जाएगा, फिर यहाँ का गेट ओपन होगा, सोडियम अंदर गया, फिर वो वापस बंद हो जाएगा. समझ में आया? तो हमेशा ये गेट ओपन नहीं रहता है, रेस्टिंग कंडीशन में ये गेट बंद रहता है. समझा मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. ओके, तो लेट अस सी रेस्टिंग पोटेंशियल. रेस्टिंग पोटेंशियल में आप देख सकते हो, देखो सोडियम ज्यादा है बाहर और पोटेशियम भी ज्यादा है अंदर, पर बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि साथ में प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है. ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आप एक्सोलेमा भी कह सकते हो. अभी हम एक्सॉन के बारे में बात करें तो ये एक्सोलेमा है. लेट अस से so electrical charge across the cell membrane of a neuron in its resting stage. So this is a resting stage. Outside of the cell is positive, inside is negative. Okay. अभी डीपोलराइज में क्या हो जाएगा? डीपोलराइज में क्या होगा? ये सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो जाएगा. होगा कि नहीं? क्योंकि सोडियम ज्यादा अंदर जा रहा है. So during depolarize what will happen? The sodium का गेट ओपन हो गया, but not the potassium का गेट. तो सोडियम फटाफट अंदर गया and brings about depolarization. Opposite of polarity मतलब क्या? अंदर पॉजिटिव हो गया, so बाहर नेगेटिव हो गया, क्योंकि सारा सोडियम तो अंदर चला गया ना मोस्टली, तो बाहर नेगेटिव हो गया. तो इनर becomes positive. The value of कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है? 30 to 60 millivolts. This triggers depolarization in the next part. फिर ऐसे ही होते जाएगा और जो पहले वाला हिस्सा है वो रिपोलराइज हो जाएगा. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. So again you can see with this diagram, you can see, देखो कैसे सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम अंदर आ गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया. पर आगे का देखो चैनल्स नहीं ओपन हुआ, आगे का गेट नहीं ओपन हुआ. जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ते जाएगा वहां के चैनल्स या गेट ओपन होते जाएंगे और ये फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा. तो वेव दैट इज नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स डाउन द न्यूरॉन. चेंज इन द चार्ज ओपन्स नेक्स्ट. अब यहाँ पे जैसे ही कुछ हलचल हुआ, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा हो गया, यहाँ का चैनल अपने आप ओपन हो जाता है. ठीक है? यस. आप मुझे पूछोगे ना कि मैम यहाँ आगे का चैनल कैसे ओपन होता है, तो ये जो पॉजिटिव अंदर ज्यादा है इट विल स्टिम्युलेट द नेक्स्ट गेट टू ओपन. फिर आगे का गेट वैसे ही ओपन होगा, फिर आगे का गेट वैसे ही ओपन होगा. सो देखो, चेंज इन द चार्ज ओपन्स द नेक्स्ट सोडियम गेट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज गेटेड चैनल. इसीलिए तो हम इसे वोल्टेज गेटेड चैनल कह रहे हैं. सोडियम कंटिन्यूज टू डिफ्यूज डाउन न्यूरॉन and the waves moves down the neuron, which is called as the action potential. Understood? Yes, ma'am.
अब रीपोलराइज होगा, ठीक है, मैसेज आगे गया गया गया, इसको वापस रीपोलराइज करना है, मतलब सोडियम वापस बाहर आ जाना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन. So it occurs at a short interval, जिसको हम refractory period बोलते हैं. Refractory मतलब जो छोटे टाइम में होता है. So large number of sodium on the inside causes a drop in the permeability, making it more permeable to potassium ion. अब कौन ओपन होगा? रीपोलराइजेशन के लिए हमारा पोटेशियम गेट ओपन होगा. रीपोलराइजेशन के लिए हमारा पोटेशियम गेट ओपन होगा, ठीक है. और डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा गेट ओपन हुआ था? सोडियम का गेट ओपन सोडियम. हुआ था, ठीक है. रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम का गेट ओपन होगा. सो स्लोली क्लोजिंग द सोडियम गेट. अब सोडियम का अगर गेट बंद हो गया तो अब सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है. दिस एक्शन इज अ लोकलाइज्ड एक्टिविटी. सो मतलब कुछ ही पार्ट में होता है, इसलिए हम उसको लोकलाइज्ड बोल रहे हैं. सो सोडियम आयन passes out very rapidly as compared to the entry of sodium. So sodium gate are closed, अब potassium are open. So this sodium and potassium pumps becomes operational. This process की वजह से the wave of stimulation causes depolarization, so repolarization, and again the things are getting back to normal. ठीक है. So you can see the diagram now. देखो एक बार ये वेव आगे चला गया तो अब कौन सा गेट ओपन हो गया? पोटेशियम गेट. देखो फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया, वापस बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो गया. So combined waves travel down neuron. Waves of opening channel moves down neuron. So signal moves in one direction. ऐसे ही सेम डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में नहीं आता. So flow of potassium out of the cell stops the activation of sodium channels in wrong direction. And this is the diagram showing all the three conditions at a one stretch. So polarized, then depolarized and repolarized. And we have already learned about the saltatory conduction, है ना. तो क्या हो रहा है? इम्पल्स जंप करता है ना. इम्पल्स क्या कर रहा है? जंप कर रहा है एक्सॉन के ऊपर, क्योंकि माइलिन शीथ है. माइलिन शीथ होने की वजह से क्या हो रहा है? ये जो इम्पल्स है ना वो जंप करता है फटाफट. इट इज जंपिंग and that conduction is called as a saltatory conduction. Saltatory conduction. Jumping का मतलब होता है saltatory. You can see over here with this diagram the things will be much more clear to you all. Sodium अंदर आना, potassium, then potassium, and again the things in polarized state क्या होता है, then depolarized में क्या होता है और repolarized में क्या condition है. You can take a screenshot of this page. Again with the same thing. Okay, now this is a topic which has been not been given in your book, but if you want you can just see over here also how the neuron fires. So more if the things becomes अच्छे से नहीं हो रहा है ये action potential generate, so that will lead to the neuron fire which you will be learning in your further classes. ठीक है, so ये वाला part आपको नहीं है. Only you are having this saltatory conduction. You can see what is saltatory conduction. Myelin sheath होता है इसके ऊपर तो, और यहाँ पे बीच में nodes of Ranvier होता है. So the impulse will be jumping from here to directly nodes of Ranvier. Again from here to nodes of Ranvier. तो क्या हो गया? Fast हो गया. बीच का distance travel नहीं करना पड़ा ना, सिर्फ jump करना पड़ा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. That is called as a saltatory conduction. And the rate of saltatory conduction is 120 meters per second. Understood? You can just go through this table. You can take a screenshot or you can just write down also this table.
It has been given in your textbook also. It has been given in your textbook also. So that is important, which can be asked in the board exam. Just go through this flow table. Any point if you have not understood, please ask me. Okay, I will, till then, I will just want you to show the video. Wait. Yes, all of you can see the screen of action potential now. Yes. Yes. I will just show you the video. Any point if you have not understood, please let me know. Okay, I will on the video. आवाज आ रहा है या नहीं मुझे प्लीज बताओ, ठीक है? This is a neuron which has four main आवाज आ रहा है बेटा? Yes, Yes. ma'am. ठीक है. parts. The dendrites receive information. The cell body processes and integrates that information. The axon carries the information along long distances from one part of the neuron to another, and the axon terminal transmits the information to the next cell in the chain. A bundle of axons traveling together is called a nerve. Nerves can be very long as they often need to transmit information over long distances. As we just saw, the dendrites are the part of the neuron that receives incoming signals. Based on the strength of this incoming stimulation, the neuron must decide whether to pass that signal along or not. If the stimulation is strong enough, the signal is transmitted along the entire length of the axon in a phenomenon called an action potential. When this happens, we say the neuron fires. Transmission of a neuronal signal is entirely dependent on the movement of ions or charged particles. Various ions, including sodium, potassium, and chloride, are unequally distributed between the inside and the outside of the cell. The presence and movement of these ions is not only important when a neuron fires, but also at rest. To start,
let's think about the positively charged sodium and potassium ions. When a neuron is not sending a signal, it is considered to be at rest. In a typical neuron, in its resting state, the concentration of sodium ions is higher outside the cell than inside. The relative concentration of potassium ions is the opposite, with more ions inside the cell than outside. This ionic separation occurs right at the cell membrane and creates a chemical gradient across the membrane. Because ions are charged particles, we also need to consider their charge when thinking about their distribution across the membrane. At rest, there are more positively charged ions outside the cell relative to the inside. This creates a difference in charge across the membrane, which is called an electrical gradient. Together with the chemical gradient we already mentioned, we refer to this ionic imbalance as the electrochemical gradient. The difference in total charge inside and outside of the cell is called the membrane potential. At rest, when no signals are being transmitted, a neuronal membrane has a resting potential of approximately -70 millivolts. This means that the inside of the cell is approximately 70 millivolts less positive than the outside. Both the chemical and electrical gradients we just discussed contribute to establishing this potential. While the inside of the cell has a net negative charge and the outside of the cell has a net positive charge, the charges line up at the membrane and the bulk solution on either side is actually electrically neutral. The resting membrane potential is the point where the cell has achieved electrochemical equilibrium. This means that the concentration gradient and the electrical gradient for each ion is equal and opposite. Ions cannot simply move across the membrane at will. Instead, they need a protein embedded in the membrane to facilitate their movement. Most ions cross the membrane through a structure called an ion channel. Ions move through channels by passive diffusion along their concentration gradient. Some ion channels are always open, but many require a signal to tell them to open or close. For example, voltage-gated channels only open when the membrane potential reaches a certain value. On the other hand, ligand-gated ion channels are triggered to open when they are bound by a specific molecule. Mechanically gated ion channels open in response to physical forces such as changes in length or changes in pressure. Most ion channels are selectively permeable, meaning that they only allow one or a small subset of ions to pass through. Voltage-gated ion channels, for example, typically only allow a single ion to cross the membrane when they open. This means that we need separate channels for each ion, i.e., voltage-gated sodium channels, as well as voltage-gated potassium channels. As ions move through a channel and cross from one side of the cell membrane to the other, they cause the membrane potential of the cell to move away from its resting potential. If the resulting change in membrane potential is small, we call this a graded potential. Graded potentials can vary in size, can be either positive or negative, are transient, and typically do not result from the opening of voltage-gated ion channels. When ion channels open and a graded potential occurs, the neuron moves quickly to reset its membrane potential to resting values. This is accomplished primarily by the use of the sodium-potassium pump, which uses the energy generated by ATP hydrolysis to actively transport ions across the membrane against their concentration gradient. In other words, sodium is transported to the outside of the cell, where its concentration is higher, and potassium is transported back into the cell, where its concentration is higher. One cycle of this pump transports 3 sodium ions outside the cell and brings 2 potassium ions inside the cell.
This unbalanced charge transfer contributes to the separation of charge across the membrane and also to the ionic concentrations we see at rest, thus restoring the chemical and electrical gradients to their resting levels. Maintaining these ionic balance in neurons is so important that this process can account for 20 to 40% of the brain's total energy use. Only when the resting membrane potential and ion distributions are maintained at precise levels will the neuron be poised and ready to fire an action potential. When the outside stimulation is large enough to bring the membrane potential in the neuron body up from -70 millivolts to the threshold voltage of -55 millivolts or higher, this triggers an action potential at the axon hillock, which then travels down the axon. Voltage-gated sodium channels have 3 states: open, closed, and inactivated. At rest, the sodium channel is closed. Once the cell membrane reaches the threshold voltage, the channel changes to an open position and sodium rushes into the cell because of the electrochemical gradient. As positive sodium ions enter the cell, the membrane potential becomes less negative and more positive as it approaches 0 millivolts. This is called depolarization. Eventually, the voltage gradient goes to 0 and beyond 0, up to a positive 30 millivolts. This is called an overshoot. As the membrane potential becomes positive, the sodium channel inactivation gate shuts, making the channel inactivated. This stops the flow of sodium ions into the cell. The change in membrane potential also opens the voltage-gated potassium channels, though they open and close more slowly. Because of the potassium electrochemical gradient, potassium ions flow out of the cell, making it less positive and eventually negative. This process is called repolarization. Because the potassium channels are a little slow to close, for a brief period the membrane potential is hyperpolarized. It's more negative than the resting potential. During hyperpolarization, the potassium channels close. Throughout all this, the sodium-potassium pump is still working. The pump restores the chemical gradients by putting the sodium and potassium back in place. And the pump reestablishes the potential gradient by moving more sodium ions out than potassium ions in. This returns the membrane potential back to its resting potential. During repolarization, the inactivated sodium channels won't respond to any stimulus at all. During this time, the neuron is in its absolute refractory period, the period of time when a nerve cannot fire another action potential no matter how strongly it's stimulated. The absolute refractory period prevents action potentials from happening again too quickly and prevents the action potential from traveling backwards along the axon. During hyperpolarization, the sodium channels are closed and the inactivation gate opens. There is no change in sodium flow, but now they could be opened again. This is called the relative refractory period, because while the sodium channels could open, it would take a larger than usual stimulus to reach threshold, because the cell is hyperpolarized due to the potassium still leaving the cell. The amplitude of the action potential for a particular neuron, that is, the maximum voltage in one neuron during an action potential, never changes. An action potential doesn't get bigger with a bigger stimulus. It's all or nothing. It either happens or it doesn't happen. What can change is the frequency of the action potential. A neuron might fire many more times per second in response to, say, an intense pain, and less frequently in response to a gentle breeze.
Some axons transmit action potentials faster than others. One variable that increases conduction velocity is the presence of myelin sheaths around axons. Myelin speeds up transmission through a process called saltatory conduction, in which the action potential signal appears to jump along the part of the axon covered by the sheath. In the peripheral nervous system, the sheaths are formed from glial cells known as Schwann cells. There are small gaps between Schwann cells called the nodes of Ranvier. The action potential appears to jump from node to node, speeding the transmission. In the central nervous system, the sheaths are made by cells known as oligodendrocytes. To review, with no stimulus, the membrane is at its resting potential. A small stimulus causes a graded potential, and a stimulus above the threshold creates an action potential and the neuron fires. So yes, all of you have understood? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. So with that, we have completed this topic. Okay. Now, as sir has told, we will be starting with the neat point of this particular topic. Okay. So all of you are having that hard copy with you all. Are you having the hard copy of the control and coordination नोट आपके पास है बुक कि पीडीएफ ही है सबके पास? PDF. 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 चलो ठीक है, पीडीएफ ही ओपन करो आप लोग. आई विल ऑल्सो ओपन द पीडीएफ. ठीक है, open the PDF of this control and coordination. Anybody is having any sort of doubt first in this particular lesson? किसी को कुछ doubt है तो I will clear. अगर आप एक बार चेक कर लो आपके टेक्स्ट बुक को, आपको कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी, or otherwise we will be starting with the neat part of this particular lesson. You can refer your textbook also. I will give you 5 minutes. Till then I will open the PDF also. If anybody is having any sort of doubt, you can just ask me.
Okay. So all of you can see the screen. So we have seen over the structure of neuron, all these things we have already learned. Okay. So we have learned about the three distinct part of the neuron cell body, that is cyton or the soma, axon and the dendron, branching to form dendrites. Then we have learned about the myelinated and non-myelinated, which can also be called as a medulated and non-medulated. Then we have learned the different types of neurons also, uni, bi and multi. Then today only we have learned about this conditions, transmission of impulses. Here, this is a chemical transmission. जो लास्ट पार्ट होता है एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, synaptic vesicles with the help of calcium ion. Here calcium ion plays a very important role. Calcium ion की वजह से क्या होता है, synaptic vesicles break होंगे, acetylcholine release होंगे in between, and then that will be received by the postsynaptic membrane जहाँ पे receptors present है, and again the impulse will be traveling to the next neuron. So calcium ion plays a very important role over here. Then we have seen about the system, central, peripheral and the autonomous. We have learned about the different regions of the brain. Midbrain also we have seen, hindbrain also. What is a spinal cord also called as? It is also called as a myelin. And brain is also called as encephalon. So we have learned all the different types of fibers. We have seen the difference between the cranial and the peripheral spinal nerve. We have seen, अच्छा ये वाला याद कर लो अभी, ये इसके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है और कौन सा मिक्स्ड है. प्लीज गो थ्रू दिस. आप इसको नोट डाउन भी करके रख सकते हो. सेंसरी नर्व कौन से हैं? देयर आर 3 pairs of sensory nerves, that is first, second and the eighth. वैसे मोटर वाले कौन से हैं और मिक्स्ड वाले कौन से हैं, ये आपको, आप इसको पूरा रेक्टिफाई कर लो. Then the spinal nerve distributed this way: cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. Autonomous, working by two things, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic is present in the form of sympathetic ganglions. There are 22 pairs of ganglions which are arranged on the sympathetic cord on either side of our vertebral column. Then we have seen with respect to each and every organ, the sympathetic से क्या होता है और parasympathetic से क्या होता है. This is very important for NEET. Very important for NEET. Then reflex action was been not there for this part, for what to say, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं था रिफ्लेक्स एक्शन, बट यस आपको थियरी के लिए, इसके लिए नीट के लिए आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द रिफ्लेक्स एक्शन फर्स्ट बिकॉज दैट इज देयर फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. वेट, हाँ. सो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. व्हाट इज दैट? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है. इट इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन. Then who is controlling the reflex action? It is controlled by the spinal cord. ठीक है. Our reflex action has been controlled by our spinal cord. ठीक है. तो रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज विद अ ब्राइट लाइट. कोई भी चीज है, when we can when we touch a hot object, cold thing, any scare, when we scare to the animals, all these things are the part of the reflex action. Now reflex action is taking place with the help of a reflex arc. Arc का मतलब रास्ता.
तो वो रास्ता कैसा है, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन हमारे डॉर्सल रूट में है, वहां से जाएगा हमारे इंटर न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन जनरेट होगा और फिर इफेक्टर तक आएगा। यस, तो ये हमारा जो रास्ता है, इट्स अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल पाथवे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गलती से हाथ कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो गया, तो मेरे हाथ में जो सेंसरी सेल्स है, रिसेप्टर ऑर्गन्स है, उसको रिसीव करेंगे। दे विल पास ऑन द मैसेज टू माय सेंसरी न्यूरॉन। My sensory neuron will carry the message through the dorsal root of the spinal cord, dorsal root of the spinal nerve, है ना। वहां से कहा जाएगा, मेरे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जाएगा। ग्रे मैटर के अंदर इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है या एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट है। देयर द डिसीजन विल बी टेकन कि आई हैव टू पुल बैक माय हैंड बैक, pull my hand back. So again this message is been given to the motor neuron. Motor neuron will bring the message to the effector organ and I will immediately take my hand back. Understood? तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, रास्ता, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स का पाथवे। अंडरस्टूड, यस और नो? Yes. Yes. सो ये डायग्राम अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस। जैसे कि ये पैर है, ये लेग है, कोई भी स्टिमुलस मिला, एफरेंट न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है, वहां पे ग्रे मैटर में कौन बैठा है, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन विल डू द एनालिसिस, जजिंग एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज बीन डिसाइडेड विद द स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर में जो इंटर न्यूरॉन बैठा है वो डिसाइड करेगा। सो वॉट एवर इज अ डिसीजन विल बी टेकन बाय द मोटर न्यूरॉन टू द effector organ and we will show the response. So this is what is called as a reflex arc. Now there are two types of reflex action, unconditioned and conditioned. Unconditioned मतलब जो इनबॉर्न होता है या फिर जो हेरिडेटरी होता है, एंड कंडीशनड मतलब जो हम अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। अनकंडीशनड मतलब अगर कोई 1 मिनट का बच्चा है, 1 मिनट का भी अगर बच्चा है, अगर आप उसको भी चिमटी लोगे, अगर आप उसको भी ये करोगे, उसको निडल प्रिक करोगे, तो भी वो रोएगा कि नहीं रोएगा, यस और नो? Yes. Yes. 1 मिनट का भी बच्चा है तो भी रोएगा। दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ना, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है कि नहीं। हमने उसको निडल प्रिक किया, उसको इंजेक्शन लगाया, तो वो रोएगा। तो वो क्यों रो रहा है, बिकॉज इट इज इनबॉर्न, इनबॉर्न पहले से प्रेजेंट है, अनकंडीशनड है, हेरिडेटरी है। ठीक है, कंडीशनड मतलब जो हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, हम जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। कंडीशनड वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इट वाज बीन एक्सप्लेन्ड विद अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ पावलोव। पावलोव नाम के साइंटिस्ट ने कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ अ डॉग का एक्सपेरिमेंट, डॉग का एक्सपेरिमेंट। व्हाट ही डिड, उसने डॉग को खाना जब भी देता था वो तो बेल बजाता था। ठीक है, जब डॉग को खाना देने का टाइम रहता था तो वो पहले एक बेल बजाता था और फिर उसको खाना देता था। ऐसे उसने 5 दिन किया, 10 दिन किया, तो क्या हो गया, डॉग के रिफ्लेक्स एक्शन ने समझ लिया कि जब बेल बजता है तो मुझे खाना मिलता है। अंडरस्टूड? जैसे हम सब बचपन में स्कूल डेज में रिसेस का बेल का इंतजार करते थे। हाँ, रिसेस का बेल होता था, यस, तो हमें भूख लग जाती थी, वो टाइम को हमें भूख लगना शुरू हो जाती थी। अंडरस्टूड, यस और नो? ठीक है, सो इट वाज व्हाट इज व्हाट, कंडीशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पर अभी भी अगर आप कभी रास्ते से जा रहे हो और अगर आपको स्कूल का बेल सुनाई दिया तो अभी भी आपको भूख लगती है क्या, सलाइवेशन होता है क्या? No. No. क्यों नहीं होता है? बिकॉज आपके बॉडी ने उसको क्या किया, वो कंडीशनड है। आप उसको भूल जाओगे, मतलब उसको भूल जाओगे जब आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड योर बॉडी वाज बीन कंडीशनड टू have your break, have your break at particular time, so that was been given with ringing a bell.
सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक तो आप अच्छे बच्चे के जैसा जब भी बेल बजती रहोगी तभी खाते रहोगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी और मस्ती आने लगी होगी तो आप लेक्चर के बीच में भी खाते रहोगे, है ना। सो दैट इज डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। बट जनरली नॉर्मली क्या था कि कंडीशनड हुआ था अपना बॉडी, अपना माइंड, अपना ब्रेन कंडीशनड हुआ था कि बेल बजते ही खाना खाना है। बट ऐसे ही वो कहीं पे भी बेल बजेगा तो आप खाओगे क्या? नहीं, वो स्कूल के लिए ही पर्टिकुलर था। मतलब जब आप कॉलेज में गए, जब आप बाद में ये हो गए, फिर आपको उसकी बेल की आदत छूट गई, बिकॉज फिर हर बार वो बेल नहीं बजता था। सो दैट वाज बीन कॉल्ड एज अ कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो ही हैज डन द एक्सपेरिमेंट विद अ डॉग। तो डॉग को जब वो बेल बजाता था और फिर खाना देता था, तो जब भी बेल बजता था डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि डॉग को पता था कि अब खाना मिलने वाला है। अब पैवलोव को ये प्रूव करना था कि इट इज नॉट परमानेंट वन, इट इज नॉट परमानेंट। सो व्हाट ही डिड, उसने नेक्स्ट 15 डेज में क्या किया, बेल बजाता था पर खाना नहीं देता था। बेल बजाता था पर उस टाइम पे खाना नहीं देता था, बाद में कभी भी देता था। समझ में आया? तो फिर वापस क्या हो गया, डॉग के रिफ्लेक्स एक्शन ने उसको समझ लिया कि ठीक है अब बेल बजता है तो खाना नहीं मिलता है। समझ में आया? तो उसने सलाइवेशन करना बंद कर दिया। Are you understanding what I mean to say? So Yes, ma'am. this is temporary. Conditioned one is temporary. जैसे ड्राइविंग आपने सीखा, साइकिलिंग सीखा, जो भी आप सीखते हो, पर अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल जाते हो। बट यस, अगर आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर से आ जाएगा। सो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग। जैसे आपने स्विमिंग सीखा, हाँ, और उसके बाद आपने 20 साल कभी स्विमिंग किया ही नहीं, तो आपको करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। पर फिर अगर आप 5 डेज 10 डेज करोगे तो फिर यू विल बैक टू नॉर्मल, फिर से आपको सब कुछ आ जाएगा। सो कंडीशनड का मतलब क्या होता है, विच रिक्वायर्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग, विच रिक्वायर्स अ एक्सपीरियंस, विच इज टेम्पररी, विच में डिसअपियर, विच इज एक्वायर्ड। बट अनकंडीशनड इज इनबॉर्न, हेरिडेटरी, है ना। उसको आपको मम्मी को रोज सुबह सुबह उठ के चिमटी लेने की जरूरत नहीं है कि बाबा चिमटी लेंगे तो हाथ पीछे लेना है ना, दैट इज कंडीशनड। आप दिमाग में वो फिट हो गया है, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज विथ अ स्ट्रॉन्ग लाइट, स्नीजिंग, कॉफिंग, है ना। अगर कोई चीज डस्ट पार्टिकल गया तो आप तुरंत स्नीजिंग करोगे, कुछ अटक गया खाना तो आप कफिंग करोगे। तो ये सब क्या है, अनकंडीशनड है, which requires no previous experience. So conditioned के लिए please remember the name of the scientist, that is a Pavlov, which has not been given over here. Now different types of receptors. This was been also deleted in your part, board के part में delete था, but आपको NEET में पढ़ना है. So there are different types of receptors we are going to learn. Receptors वो होते हैं जो receive करते हैं, sensory neuron को receive करते हैं। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन में प्रेजेंट है। थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर स्किन, which is having the stimulus for the temperature, मतलब कोल्ड टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर का जो जानना है, मतलब कि गर्म है ठंडा है, ये हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर से हमें पता चलता है। फॉर कोल्ड, फॉर वार्म, ठीक है। देन हमारे स्किन में टच एंड प्रेशर के भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। टच के रिसेप्टर्स को हम टैक्टाइल रिसेप्टर्स बोलते हैं और प्रेशर के रिसेप्टर्स को हम टैंगो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो हमें टच और प्रेश के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स। हमारे नोज में, नेजल कैविटी में स्मेल के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिसेप्टर फॉर स्मेलिंग। हमारे टंग में भी केमिकल रिसेप्टर का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं गस्टैटो। गस्टैटो का मतलब होता है टेस्ट, टेस्ट रिसेप्टर्स। हमारे ईयर में दो अलग अलग रिसेप्टर्स है, एक सुनने के लिए, एक बैलेंसिंग के लिए। तो जो सुनने के लिए उसे हम बोलेंगे फोनो रिसेप्टर या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर भी बोल सकते हो आप इसे, फोनो या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे कान के कॉर्टी रीजन में होता है। और हमारे इंटरनल ईयर में एक बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए भी रिसेप्टर्स होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटो रिसेप्टर्स, जो कि हमारे ईयर के क्रिस्टियन मैक्युला रीजन में होता है। अंडरस्टूड?
आईज में रॉड्स एंड कोन्स की वजह से फोटो रिसेप्टर्स that is sensitive to the light. Then all the tissues except the neural tissues in the brain are responsible for pain. जो भी अलग अलग टाइप के पेन्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मसल, टेंडॉन्स एंड जॉइंट्स में प्रोप्रियोरेसेप्टर्स, अगेन फॉर फटीग, फॉर मसल टोन, फॉर पेन एक्सेट्रा. अंडरस्टूड? Yes. Yes. So now eye and ear also I will be teaching you for this part. So it will take time and we don't have that much of time. Okay. So we will be starting with the few questions and in the next class I will be teaching you eye and ear. Okay. So एक बार देखो questions read करो, चलो solve करो. Both neural and hormonal. Option, both neural system and hormonal system. Very good. Next. Network of point to Network point. of point-to-point connections for quick coordination. Yes. न्यूरॉन का काम क्या है? All of these. All of these. All of these. चलो assertion और reason right है क्या देखो. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स मतलब नॉन कॉर्डेट्स में सिंपल रहता है क्या? हाँ या नहीं? इनवर्टिब्रेट्स में Yes. सिंपल Yes, simple. रहता है. इन हाइड्रा न्यूरॉन दैट कैन डिटेक्ट एंड रिसीव द स्टिमुलस आर एब्सेंट. ऐसा है क्या? No. नहीं. No. No. तो असर्शन तो राइट है पर रीजन नहीं राइट है. सो ऑप्शन सी. फिफ्थ वन बताओ. Insects as इंसेक्ट्स में कैसा रहता है न्यूरल सिस्टम? इंसेक्ट्स में उनका नर्व कॉर्ड किधर रहता है? डोर्सल की वेंट्रल साइड रहता है. इंसेक्ट्स में नर्वस सिस्टम कौन सा साइड रहता है? डोर्सल की वेंट्रल. हमारा कहां पर है डोर्सल की वेंट्रल? ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम कहां पर Dorsal. है? डोर्सल. ओके. तो हमारा उल्टा रहता है इंसेक्ट्स में, तो उनका किधर है? Ventral. Central. वेंट्रल है ना. फर्स्ट पॉइंट तो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे डोर्सल दिया है. इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं क्या इंसेक्ट्स में? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन तो हाइड्रा में है. इंसेक्ट तक आते आते वो लोग ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं. सो इंसेक्ट्स में ब्रेन होता है एंड वेंट्रल नर्व मतलब गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होता है. सो सी इज द राइट आंसर. उनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होते हैं और द न्यूरल टिश्यूज. समझा? Yes. Yes. देन डैश न्यूरॉन कंटेन्स अ सेल ऑर्गेनेल. किसमें सेल ऑर्गेनेल होता है? Cyton. 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 नेक्स्ट, ग्रेन्युलर बॉडीज को क्या बोलेंगे? कौन है ग्रेन्युलर बॉडी? इतना सिंपल तो क्वेश्चन है बच्चा. Nissel's granules. नीसल्स ग्रैन्यूल. नीसल्स ग्रैन्यूल. जो वेसिकल्स हैं दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर है? वो वेसिकल्स कहाँ पर होंगे? Synaptic knob. करेक्ट. सिनेप्टिक नॉब में. माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है? अभी आपने वीडियो में देखा Schwann था ना cells, बेटा? Schwann cells and oligodendrocytes. यस, अभी आपको वीडियो में भी दिखाया गया था. श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. करेक्ट. माइलिनेटेड नर्व फाइबर किधर प्रेजेंट है? माइलिनेटेड कहाँ पे फास्ट होता है? माइलिनेटेड है मतलब फास्ट है, तो कहाँ पर फास्ट होता है? यस. Spinal and cranial nerves.
Yes, spinal and the cranial nerve. Okay. Okay, so we have solved the 10 questions today. Okay. From 11th questions, we will be starting in the next class. But before starting with the other part, I will be first teaching you eye and ear, which was been not taught you for the boards. Understood? Yes. Yes. So in the next class, I will be teaching you for NEET. I will be teaching you the eye and ear, and then please let me know. We have to start with question number 11. Okay. So goodbye to all of you, beta.